Welcome to our English Prose section of Class 10 BSc. In the last class, dear children, we have started the lesson, the story, A Letter to God, which is written by G.L. Fuentes. Gregorio Lopez Fuentes was a Mexican novelist, poet, and a journalist. Dear children, in the last part, we have discussed what? Now, what was the only hope in everybody's heart? The only hope in everybody's heart was that God would certainly help them as God sees everything, even what is deep in one's conscience. So, the following Sunday, जो कहितले लेंचो जे कौन करिया पे? Following Sunday, the daybreak रे, morning रे, लेंचो wrote a letter to God, praying him to send him how many pesos? Remember? 100 pesos. Okay, ମୁଁ କହିଥିଲି that the unit of money, pesos, so that he could sow his fields again and feed his family until the next crop came. आमे जानिथिले लास्ट सेक्शन रे आमे माने डिस्कशन करथिले कि केमति भाबरे तारो फील्ड खराब हे गेला डिस्ट्रॉय हे गेला एवं पूर्ण थरे से कोन करिछि तारो मनर विश्वास को से हारिनी भगवान को प्रे करिछि एवं फॉलोइंग संडे रे से पूरा डिसाइड करिछि पूरा एकदम ठीक करथिला जे दैट संडे दिन से कोन करिछिबो ना लेटर लिखिबो गॉड को प्रे करिवो दैट कोन पई ना 100 पेसोस ताको पैसा मागिबा पई बा तांको दैट ही विल आस्क फॉर द मनी जो मनी से कौन करिवो दैट ही कुड सो हिज फील्ड्स अगेन आउ थरे मंजी बुनी परिबो आउ थरे फसल अमल करि परिबो एवं तारो फैमिली को से फीड करि परिबो तो पिला माने एई पार्ट रे देखिबा तापरे कोन हैला ओके लेट्स सी okay so he wrote to God on the envelope put the letter inside and still troubled went to town at the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox से चिट्ठी पकई देला गॉड को चिट्ठी लिखी करिकी तापर कोन हैला देखो one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God one of the employees से मानक मध्यरु जने एम्प्लॉई who was a postman जे कि जने postman थिला ओके also held at the post office went to his boss laughing heartily ओके कौन कला ना जेतेबेले से देखिला से कौन कला ना हसिला एवं डायरेक्टली went to his boss and showed him the letter to God ता बॉस को नहीं देखेला जे कि पोस्टमास्टर थिले तांको नहीं देखेले कि दैट नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस आ कोन कहले ना तार पूरा करियर रे से केबे भी हेले एमिति गोटे एड्रेस देखि नतिला जहा आज से देखिछि द पोस्टमास्टर अ फैट अमिएबल फेलो also broke out laughing पोस्टमास्टर जे थिले जे कि जने फैट और बहुत अमिएबल मींस पिला माने Amiable means बहुत friendly kind रो जे बहुत mixing type रो friendly kind रो okay fellow also broke out laughing से मध्य बहुत जोरे हसी हसी गड़ी गले but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented what faith I wish I had the faith of the man who wrote this letter okay starting up a correspondence with God सो डियर तापर कौन है ना जिते बड़े से चिट्ठी को पाइले से सांगे सांगे तार पोस्टमास्टर को नहीं देखेला जे कि जने बहुत मेलापी फ्रेंडली काइंड रो पर्सन थिले से भी मध्य कौन कले तांको संगे पड़ी हसिले बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस किंतु सांगे सांगे सीरियस हो जाइथिले एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क तापर कौन करथिले एवं कहिथिले व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर सो स्टार्टिंग अप अ करेस्पोंडेंस विथ गॉड यू नो डियर करेस्पोंडेंस माने कौन है correspondence माने it's a act of writing a letter or communication okay it's a kind of communication so he was praising the faith of that man who the postmaster he was praising the faith of that man that who had written the letter जे के चिठीटा लिखिछि से ताको बहुत प्रेज करूथले कहीं कारण से देखिले ताको निज कैरियर भितर पोस्टमास्टर और पोस्टमैन ताको निज कैरियर भितर एमिति गोटे चिट्ठी देखि नांती जो एड्रेस लिखा है गॉड को पई बा गॉड को चिट्ठी देवा पई लिखा जाई छी
ओके सो ही वाज प्रेजिंग दैट पर्सन तांकर से जो फार्म फेथ लेंचर जो फार्म फेथ थिला जो तार जो इन्फिनाइट जो बिलीफ थिला ताको से बहुत प्रेज करुथिले कारण फॉर दैट लेटर which was written by the farmer Lencho. The postman felt that even he should have had such faith that the man had and started the communicating with God by writing a letter. तो संगे संगे तंका मनरे आसे जे चिंताधारा that ए जो लेटर आंसर दवा पई ए लेटर कम्युनिकेशन करिया पई correspondence means it's act of writing or communication. So then he started communication with God by writing a letter. Okay, then तापर देखो कौन है So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. कौन कले? So, in order not to shake the writer's faith. जे writers जे कि चिट्ठी लिखिथिला जहाँ को आम जाने लेंचो जिते से चिठीटा को पाइचंती से कहिचंती कि तांकर ये जो तार फार्म फेथ अच्छी जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो अच्छी ताको जमते शेक आमे न करिबा तार जमते किछि हैम्पर न हुए सो दे डिसाइडेड दैट द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया तांको मुंडे को गोटिए आइडिया आसिला व्हाट नाउ व्हेन द पोस्टमास्टर वाज वंडरस्ट्रक टू सी लेंचोस फार्म फेथ इन गॉड सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड ही केम अप विथ एन आइडिया कौन आइडिया थिला ना टू आंसर द लेटर ओके दैट आइडिया ऑफ आंसरिंग द लेटर so when he opened the letter he knew that it needed not merely goodwill but financial help also. That's why it's written there that when he opened it it was evident that to answer it he needed something more than goodwill. केवल सद इच्छा थिले गुड इच्छा थिले बा इनको पेपर भी हमर माने जहा दरकार ता ठारू बळी के मध्ये हम पय किछि दरकार कोन छेडा थिला बिकॉज चिठीरे पूरा लेखा थिला लेंचो वाज डिमांडेड फॉर द मनी ओनली तार एते बिलीफ स्ट्रॉन्ग थिला गॉड को ऊपरे जैसे भाबुथिला जे डेफिनेटली गॉड मोर प्रेयर सुनिबे डेफिनेटली ही विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू माय प्रॉब्लम एंड डेफिनेटली ही विल कम और ही विल सेंड द मनी जेटा के से पचारि थिला जेटा के से मांगी थिला केते 100 pesos. So but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो देखो पिला माने तापरे से कौन डिसाइड कले आ कौन कले ना बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. आमे जेमती आमे आलोचना करूथिले कि तांको मनर गोटे चिंताधारा आसिला कि नाई ए लोकटीर एते सुंदर एते भलो भाबरे तार विश्वास अछि भगवान को ऊपर दैट वी कैन नॉट शेक द राइटर्स फेथ वी कैन नॉट शेक दैट पर्सन्स faith that person is having the faith upon God. So they decided that yes we will do something or we'll definitely help kariba kaha ko na se person ko je ki asked for money from his employees. That is who Lencho. So he himself gave part of his salary. से निजे मध्य निजर सैलरी रो किछि पार्ट के जे सम ऑफ द मनी से डिस्ट्रीब्यूट कले डोनेट कले आउ थेर निजर एम्प्लॉइज माने को मध्य कहिले इवन एम्प्लॉइज माने मध्य दे वर सो ओब्लाइज्ड दैट दे आल्सो गिव समथिंग फॉर एन दिस एक्ट ऑफ चैरिटी. यू नो डियर व्हाट डू यू मीन बाय चैरिटी? इट्स अ काइंड डीड. चैरिटी माने जिते द पर्सन हु आर इन द नीड जो माने को किछि आवश्यकता अछि जो माने दरकार रे अछंती जो माने असुविधा रे अछंती सेमान को हेल्प करबाटा होची चैरिटी कहंती. ओके सो देन कौन है देखो that he asked money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his way. तांको निजर बंधु बांधव बहुत गुड़े लोक जे तांको जानिथिले से मध्य कौन करथिले ए एक्ट ऑफ चैरिटी पई राजी होइथिले एवं समस्ते मनी डिस्ट्रीब्यूशन करथिले बा समस्ते डोनेशन देइथिले समस्ते डोनेट करी कलेक्ट करथिले बिकॉज द पोस्टमास्टर वाज वेरी मच फार्म और स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. से डिसाइड करथिले से प्रतिज्ञा करथिले कि नाही ए लोकटी को हम जेमिति हेले भी सहाय्य करिबा. बुझियला पिला माने एबे देखो थर्ड पैराग्राफ. इट वाज impossible for him to gather together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half.
बुझी होचे देखो मु कहि दउछि तुम मन को इट वाज इम्पॉसिबल यह असंभव थिला कौन पाई ना फॉर हिम टू गैदर टुगेदर ओके एते गुडे पैसा माने 100 पेशोस को कलेक्शन करिया पाई ऑन द पार्ट ऑफ द पोस्ट मास्टर इट वाज सिंपली इम्पॉसिबल असंभव थिला पूरा पैसा को जुगाड़ करिया पाई तथापि तांकर एम्प्लॉइज निजर सैलरी तांकर निजर सेवराल फ्रेंड्स समस्त हेल्प करबा परे मध्य 100 पेशोस वाज इनफ ओके कि तांको पई माने कलेक्शन करबा पई कष्ट थिला सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ रो और टिके अधिक नॉट 100 बट हाफ 50 और ताठू आउ किछि अधिक पैसा से माने जोगाड़ कले दबा पाई बा सहाय्य करबा पाई he put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God बुझेला आउ कौन कले से पैसा को से एनवेलप रे पुरैले एड्रेस टू लेंचो ओके यू कैन सी इन द स्क्रीन से कौन कले से एनवेलप रे ऊपर केवल गोटे वर्ड लिखिले सिग्नेचर देले बा लिखिले कौन गॉड माने जेमती लेंचो को लागिवो कि दैट द लेटर वाज कंप्लीटली फ्रॉम गॉड ओके प्रोबेबली इट वुड बी द गॉड ओके डियर ओके So, the following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो कौन है देखो द फॉलोइंग संडे ओके से जो संडे रे लेंचो केम अ बिट अर्लियर बहुत जल्दी आसीगला लेंचो कारण से तो फर्स्ट लेटर लिखि सारथिला ना कि मोर पैसा दरकार तो से जानी थिला जे आज बोध निश्चित ईश्वर ता पई पैसा पठेबे सो ही केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम ओके पचरे पई आसी जाइथिला जे ता पई कोनोसी चिट्ठी अछि कि इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर से जो पोस्टमैन जे कि प्रथमे ता चिट्ठी पाइथिले से कोन कले से निजे हैंडेड द लेटर टू हिम ताको से निजे हैंडेड ताको हैंड ओवर कले काहा को लेंचो को व्हाइल द पोस्टमास्टर कोन करूथिले ना एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन यू नो डियर कंटेनमेंट माने सैटिस्फाइड कंटेंटेड ओके माने satisfied completely खुशी थिबा जोटा कोनते कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डिड माने गोटे भल कार्य करिसंती ना कारण असुविधा थिबा से लोकटी को से सहाय्य करिसंती निजर सैलरी डोनेट करिसंती निजर सेवराल फ्रेंड्स को से रिक्वेस्ट करके पैसा कलेक्शन करिसंती इवन निजर एम्प्लॉइज माने बदे तांको से रिक्वेस्ट करिसंती तुमे तुमर सैलरी रो किछि पार्ट्स तमे कंट्रीब्यूट करो ओके से ते कौन करुले ना एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन से देखिया को चाहूतिले कि लेंचो ए जो पर्सन जे कि चिट्ठी लिखिचंती गॉड को फॉर 100 पेशोस ही वाज आस्किंग फॉर द मनी ओके से पाइसला परे तारो मुखरे जो कंटेनमेंट जो सैटिस्फैक्शन जो गोटे फुल एक्सप्रेशन देखिबे फॉर दैट ही वाज ओनली वेटिंग ओके सो लेट्स सी तापरे कौन हैला लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी किंतु लेंचो कौन करथिला गोटे अल्प माने स्लाइटेस्ट सरप्राइज भी नथिला तार मुहरे जे दैट मनी पाइसला परे such was his confidence but he became angry when he counted the money तार एते कॉन्फिडेंस थिला पिला माने भगवान को ऊपर कि यस आई हैव रिटन द लेटर आई हैव आस्क्ड फॉर मनी सो डेफिनेटली गॉड विल लिसन माय प्रेयर एंड ही विल डेफिनेटली सेंड द मनी सो एते कॉन्फिडेंस थिला लेंचोरो हार्ट रे फॉर गॉड दैट से तो स्लाइटेस्ट सरप्राइज और शो गलानी रादर ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी काहे कहले पिला माने जस्ट टू थिंक अ व्हाइल बिकॉज इट वाज नॉट कंप्लीट मनी पूरा पैसा नथिला ना 100 पेसोस नथिला ओनली व्हाट हाउ मेनी लेट्स सी गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक
लेंचो कहला भगवान केबे भी हेले एते बड़ भूल मो संगे करि परिबेनी नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड ना तांको डिनाय भी करि परिबेनी लेंचो को जेट से जहा रिक्वेस्ट करिछि कारण जेमती साधारण मनुष्यर बंधु बांधव कुटुंब को कहला बली से भी भाबिथिला जे गॉड को जेहेतु मु चिट्ठी लिखिछि माने डेफिनेटली गॉड मते पूरा पैसा दबा कथा एवं देइचंती मध्य बोधवे हेई पारे सो इमिडिएटली लेंचो कौन कला वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक अगेन ही मूव्ड टू द विंडो टू आस्क फॉर द पेपर एंड इंक कौन पाई easy very simple to write the second letter okay to write the second letter so feeling angry that he had not received the money what he had asked for he went to reply okay he wanted to reply the god so what did he do se kon kala na he went to the window got a paper and ink on the public writing table he started to writing जोठारे समस्ते सर्वसमूह माने लिखंती तांकर चिट्ठी पत्र लिखंती एड्रेस लिखंती देन ही आल्सो स्टार्टेड टू राइट से मध्य लिखवा स्टार्ट कला विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो ओके कौन कला रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मीन्स भ्रुकुंचन करबा जोटा हमर ओडिया रे कहंती भ्रुकुंचन करबा मुहटा को पूरा एकदम सुखी राग तम तम होई रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो ओके जेमती बहुत टेंशन बहुत वरीज थिला बली okay so started kala kono writing the letter again to god and this was the second letter caused by the effort he had to make to express his ideas again to express his ideas that with much wrinkling of his brow he started writing the second letter when he finished he went to the window to buy a stamp also he bought a stamp से तो भाबुची ना कि मु चिट्ठी लिखिबी स्टाम्प लगेबी बिकॉज विदाउट स्टाम्प रे तो चिट्ठी जीवनी एफेक्ट सेक्शन करेबी एनवेलप मु पुरेबी okay so see kon kala that he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist देखिना पिला माने केमती छेप लगै केमती लोक माने जो गां मानन करे तांकर एनवेलप रे ताकू कोन करन फिस्ट एफ आई एस टे फिस्ट माने जो मुठा लगै की ताकू दाबी दाबी की चिपी की चेष्टा करन बंद करिया पय मुद्द करिया पय So the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. Someone देखुचंती ना that the moment when the letter fell into the mailbox, जेतबे लेंचो कोन कला ना mailbox रे that the person put the letter into the mailbox, the postmaster okay went to open it. Postmaster गला कोन कला सेटा को खोलिया पई गला. So तापर देखो कोन हैला it said God of the money. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. So se kon likhila how many pesos that he got only 70 pesos mane 100 pesos ru only 70 pesos ta pakhare pahunchichi. Send me the rest since I need it very much आ बाकी जतक रहिला 30 पेसोस मते जल्दी पठांतु कारण मोर बहुत ही दरकार अछि बट डोंट सेंड इट टू मी किंतु याको मते कोन करंतु पठांतुनी थ्रू द मेल माध्यम रे मते सेंड करंतुनी बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो लेखि के से चिट्ठी बंद कला तो पिला माने आमे देखो लास्ट तीनटा लाइन अगेन देखो से कोन कहला ना गॉड of the money that I asked मु जो पैसा विषय आपन को कौन करथिली मागिथिली डिमांड करथिली only 70 pesos reached me okay only 70 pesos reached me and send me the rest बाकी पैसा मते पठांतु कौन since I need it very much because he wanted to sow the field again because his field was totally destroyed so but this time don't send it to me through the mail किंतु मते एथरक मेल माध्यम रे मते पैसा सेंड करंतनी because the post office employees कारण से भाबुतला बासे भगवान को कहिला कोहण कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स कारण से पोस्ट ऑफिस रे जो एम्प्लॉइज माने रहउचंती से माने बोधुए कोन क्रुक्स यू नो व्हाट इज क्रुक्स माने जो माने चीटिंग करंती जो माने ठक्कंती चीटर्स
ओके तो से माने बोधे से भावी जे मोर 100 पेसस रो जो 70 पेसस मो पाखे आसी ये 30 पेसस कौन है बाट मारणा हो जाए. सो डियर चिल्ड्रेन व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज लेंचो ना ही वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग simple innocent farmer. He had extreme faith upon God, okay, and that God could only help him in the distress. He never had the sense to believe that it could be the bunch of employees of the post office who had really helped him. से केबे भी हेले मध्य स्वप्न सुधा कौन भाभी भी नथिबो जे ताकू जे हेल्प करिसेंती जो 70 पेसस जो ता पाखरा से पैसा पहुंची से गॉड नुहंती बरम से बंच ऑफ एम्प्लॉइज ही ताकू कौन करिसेंती हेल्प करिसेंती. सो ही फेल्ट दैट इफ गॉड रिप्लाइज टू हिम and send him the rest of money that people would again cheat him by robbing the money. एवं से भावी जदि पुणी थे मुझे जो चिठी लिखुची ठाकुर कौन कहि दैट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल कारण अगेन दिस पीपल वुड चीट हिम एंड बाय रॉबिंग द मनी ता पैसा को लुचेकी बा चुरेकी नहीं जिबे. सो डियर चिल्ड्रेन सो लेंचो's second letter to God contained a statement of his complete dissatisfaction to the postal employees. तार जो सेकेंड लेटर है से कौन करिछि पूरा भाव रे तार डिससैटिस्फैक्शन शो करिछि कहांक विषय रे ना जो तुमरो पोस्टल एम्प्लॉइज मानक विषय रे. द सेकेंड लेटर वाज रिटन बाय लेंचो वाज द एक्यूजेशन ऑफ चीटिंग द मनी फ्रॉम द पार्सल बाय देम. से भाबुछि दैट से एक्यूज करूछि से मानकु दैट मे बी से माने चीटिंग करिकि मोर मनी को कोन करिसंती लुचेकी नै जाइछंती. Okay dears, so he never suspected God, rather he suspected the integrity of the employees of the post office. Okay, he suspect कला कहा को जे तार एम्प्लॉइज माने पोस्ट ऑफिस रे एम्प्लॉइज माने ही मोर अधा पैसा बोधे नहीं जाइछंती. सो पिला माने इथरो में कौन बुझिले जे लेंचो जे कि गोटे इनोसेंट फार्मर थिला तार एते फार्म फेथ एते स्ट्रॉन्ग फेथ थिला भगवान को ऊपर जे से कौन भाभी थिला जे निश्चित रूप से तार स्ट्रेस रे असुविधा समय रे भगवान ताको सहाय्य करिवे सेते पय से चिट्ठी भी लेखिला एवं चिट्ठी लेखिला परे जेते बेले से पोस्टमास्टर ताको पाइले सेते में से भी मते कलेक्शन करले तार रेजोल्यूशन से माने स्टक रहिले. ओके कारण से भी ताको निज कैरियर रे एवर चिट्ठी देखि नथले वाज कंप्लीटली सरप्राइज्ड वी वाज वंडरस्ट्रक. किंतु फिर भी पिला माने शेषर आमे कौन देखा पाइले जे गोटे मनीषर एते भाव तार विश्वास थिला परे मध्य आमे कौन कले से भाविची जे ये भगवान नुहंती बरम एमाने कौन करछंती मोर पैसा को चोरेकी नहीं जाइछंती. तेणु एठारे केवल ए साधारण मनीषटीर जो विश्वास आमे देखा पाइले जे किभरी भावरे से केमती भावरे भगवान को ऊपर पूरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ तार शो करिछि. ठीक अच्छे पिला माने मो भावुचे दैट तुम्हें स्टोरीटा को भल भाव पढ़ी माने तुम्हें बुझी पारि थिबो. ओके लाइन वाइज लाइन दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू. सो मो रिक्वेस्ट करुछु एंड अगेन यू गो थ्रू द टेक्स्ट एंड रीड प्रॉपर्ली. ओके आउट देन ट्राई. Okay, you just try to give all the question answer to do all the question answer. Okay, then thank you.